Too good. So guys, I have just uploaded the file. You got that? Final push नाम रखा है मैंने इस फाइल का. Too good. So guys, can we start? Rahul, good morning. How are you, beta? I'm looking at you after a long time. Chalo. Guys, have you all uploaded, मतलब downloaded the file? Not uploaded. Rather, I would tell you downloaded the file. So where can I get the file? Guys, I have put the file onto the Telegram channel, so you can just download it. Everybody. Vachan, good morning. How are you? Mary, Vignesh, good morning. Chalo. Too good. Akash, good morning. Vachan, I'm great. I'm great. Sir, how to download the file? Clive, I have uploaded the file on my Telegram channel. So you can just go there and download the channel, the file. People who are watching me on the YouTube also, yes, perfect. Thank you. Shravan, I'll pin in. ठीक है. शेड्यूल क्या है सर आज का? चलो मैं आपको शेड्यूल सब समझा देता हूँ. So guys, I'm just pinning in this counter. You can just add up, go to the files and just download it. ठीक है. Yes, Chirag, it's for IPCC. Enter group 2. Old syllabus, new syllabus, common for the common chapters. ठीक है guys. चलो. Okay. Thank you, Shravan. एंड गाइस आज का शेड्यूल मैं आपको बता दूं और बोथ मारिया इट इज फॉर बोथ फॉर ओल्ड एंड न्यू सिलेबस फॉर द कॉमन चैप्टर्स. अभी एग्जैक्टली क्लियर. अगर आपको कोई चाहिए कि शेड्यूल में कोई चेंजेस हो तो आप मुझे बताना. गाइस माय प्लानिंग इज टुडे टू स्टार्ट विद फर्स्ट वन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन के साथ साथ मैं गाइस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लूंगा. ठीक है. So dissolution के बाद piecemeal के बाद the third topic that I want is guys AS4 करना है मुझे. AS4 के बाद वापस हम लोग एक practical topic पे आएंगे and guys that is ESOP. ESOP के बाद हम लोग एक topic पे जाएंगे that is topic number 5 going to be guys AS17 that is segment reporting करेंगे हम लोग. अभी exactly clear. AS17 करने के बाद guys हम लोग आ जाएंगे buyback पे. अभी एग्जैक्टली क्लियर. गाइस बायबैक के बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर AS5 पे, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द प्रायर पीरियड आइटम्स. एंड गाइस आफ्टर दैट आई विल गो टू EPS, अर्निंग पर शेयर. मैंने फिलहाल इतना प्लान बनाया. इज इट हेल्पफुल फॉर द न्यू कोर्स सेंटर? रिया, इट इज पर्टिकुलरली फॉर द न्यू कोर्स सेंटर. गुड मॉर्निंग गाइस. आर वी ऑल क्लियर विद दिस फाइलिंग? Okay. Everyone, old course and new course, everyone agrees to it. No issues with it, right? ठीक है. चलो guys, then everybody has got the file also. Final push का file है तुम लोगों के पास. All chapters are there in old course except AS17. AS17 को वैसे भी सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे. So let me complete that according to the schedule. ठीक है. Neha, everything is applicable to old course and new course except AS17. So we can do AS17 later on also. Otherwise, we'll just complete it within 5 minutes and we'll move on. Got this. Chalo. So everyone is logged in now. Let's start with dissolution. Let's not waste the time, guys. Page number 35. Everyone should be having a book also. Dissolution. Guys, dissolution is a very simple topic. Add a slide. Chalo. First chapter that guys I will be doing is dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. Guys, can anyone tell me what are the accounts that we have to open?
What accounts are we required to open, guys? Book, Prem, that I have put a pin mark for my Telegram channel. Just join the channel and download the book. Okay? Guys, accounts to be opened that we have. The first one is known as realization account. Chalo. What is the next account that I'm required to open? Partners capital account. Partners capital account. And guys, what is the last account that I'm required to open? Is the bank account. So there are only 3 accounts to be opened: realization account, partners capital account, and bank account. Are we exactly clear with that one? Too good. Guys, there are a lot of solutions in the study material. I was looking at it, and in RTP and past practices also, that they are opening liabilities account separately, certain assets account separately. Don't do that. You're required to open only 3 accounts. First one is realization account, partners capital account, and cash and bank account. Clear? Too good. Next one. Guys, steps to solve the question. I always solve the question by steps, guys. That's the best way to solve the question. Guys, 6 steps. First one, step number 1 is transfer assets. Step 2 is transfer liabilities. Are we exactly clear with that one? Guys, transfer assets. All assets should be transferred to realization. Cash and bank account should go to cash and bank account. Liabilities. Guys, partners capital should go to capital. Reserves should go to partners capital in the PSR. And other liability should be transferred to realization. So transfer assets, transfer liability. That is my step number 1 and step number 2. Step number 3, guys, is treatment of assets. Guys, what do you mean by treatment of assets? Guys, treatment of assets का मतलब है assets can be sold or assets can be taken over. Bharat, good morning, beta. Ram Ram. Assets can be sold or assets can be taken over. That is known as treatment of assets. Guys, 4th step that comes is known as treatment of liability. Treatment of assets के बाद treatment of liability. Liability can be paid or liability can be taken over. Are we exactly clear with that one? Step number 5 is going to be expenses, dissolution expenses. And last one, step number 6, last but not the least, guys, is going to be close the books of accounts. Now, while closing the books of accounts, the first account that you will close is transfer the realization account and transfer the profit or loss on realization to partners capital in the PSR. Next one, step B, you will close, guys, partners capital account, and the capital account should be transferred to cash and bank account must tally. So that's my very simple basic as far as dissolution of partnership is concerned. 6 steps: transfer assets, transfer liability, treatment of assets, treatment of liability, record the expenses, close the realization account, transfer the balance to partners capital account, close the partners capital account, transfer the balance to cash and bank account must tally. Are we all clear with this one, guys? This is dissolution. अभी ना पार्टनर्स लोन होगा तो भी वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. वी डोंट नीड टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स लोन. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? So when do we prepare realization account and revaluation account? In dissolution, we prepare only realization account. We never prepare the revaluation account. Are we clear? Guys, any doubts with reference to the chapter, please put it in the question box. When I complete the chapter, I will look at the question block and solve all your doubts. Okay? So that consistency of the classroom is maintained. Too good. Let me take up one question, guys. Go to page number 35, please. Guys, this is the final run. आज आपको ये पूरा बुक कंप्लीट करना है अगर आपको कल के एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है तो. ठीक है, चलिए. दिस इज माय डिसोल्यूशन. Unrecorded liability का treatment like any other liability. If you pay the liability, it will be realization account debit to cash bank. चलिए, dissolution of the partnership firm, guys. Here it is. Okay, people who are watching this lecture from YouTube right now, I would request you that please come on to the Unacademy app, because in YouTube it will be live feeded for an hour from 8 to 9. After 9 o'clock, the lecture will continue only on Unacademy app, guys. So please, people who are following YouTube lectures, please join the app. In some questions, I have seen entry for cash coming for the loss of realization. I don't understand the concept behind it. Kanika, you don't need to do anything like that. You don't need to do anything like that, Kanika. Clear? Too good. Guys, question number 1. Let's start solving. Guys, I've taken this question from May 2020
हाँ, श्रवण गार्नर वर्सेस मोरे केस है, आई डू अंडरस्टैंड, बट उसमें भी अगर आप लॉस के लिए कैश नहीं लेके आओगे तो कोई इश्यू नहीं है श्रवण, ठीक है। वो पहले वाला बिलीफ था, बट अभी का बिलीफ वो नहीं कहता बेटा। चलो, फर्स्ट वन, Ram, Wazir, and Adil gives you the following balance sheet as on 31st of March 2019. First one. Bharat will cover that in piecemeal distribution. Let's start doing it now. Ram's loan 15,000, capital of Ram, Wazir, and Adil. Creditors, loan on hypothecation of stock, joint life policy reserve. Assets mein, plant and machinery at cost, furniture and fixture, stock, daters, less provision, joint life policy, patents and trademarks, and last one is cash and bank account. The partners shared the profits and losses in the ratio 4929 1/3. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रेशियोज हम लोग को चेंज करने पड़ेंगे, 4:9, 3:9, और ये 1/3 नहीं चलेगा, सो 1/3 को भी हमें वो 9 के डिनोमिनेटर पे लेके आना पड़ेगा. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 3/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो गाइस इट विल बी 3/9. सो 4:9, 2/9, 3/9. पूजा एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बेटा. Firm was dissolved on 31st of March 2019 and you are given the following information. Adil has taken loan from the insurer for 5,000 on security of joint life policy. The policy was surrendered and insurer paid a sum of 10,200 after deducting rupee 5,000 from Adil's loan and 300 as interest thereon. One of the creditor took some of the patents whose book value was 6,000 at 4,500. The balance at that creditor was paid in cash. The firm had previously purchased some shares of joint stock company and had been written off, finding them useless. The shares were now found to be worth rupee 3,000 and loan creditor agreed to accept that shares at this value. The remaining assets realized as under: plant and machinery at 17,000, furniture and fixture at 1,000, stock at 9,000, daters at 16,500. Next one. Patents at 50% of the book value. Liabilities were taken at a discount of 500, were allowed to the creditors. The expenses on realization are 2,300. You are required to prepare the realization account, the bank account, and partners capital account in columnar form. Also form necessary working notes to your answer. Guys, tell me, are you all ready? Can I start working on? सर बाकी चैप्टर्स कब कराओगे? एनबीएफसी, बैंकिंग, कंसोलिडेशन, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस. सर अभी जो शेड्यूल फॉलो करना है पहले वो करते, फिर आगे का चैप्टर्स का सीक्वेंस मैं आपको दूंगा, ठीक है? चलो ऑलरेडी ठीक है गाइस. आज मैं सोल्यूशन अभी वो स्टार्टिंग में जाके नहीं बनाता रहता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही यहीं से एक पेज ऐड करता जाऊंगा एंड आई विल जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट, ठीक है? सो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं. आई विल ऐड अ स्लाइड हियर. सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1. गाइस सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है हम लोग को? रियलाइजेशन अकाउंट. सो गाइस फर्स्ट पेज पे पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, एंड आई वुड लव कि आप लोग बातें कम करें और ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करें अभी, ठीक है? सो गाइस स्टॉप टॉकिंग एंड सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विथ मी. सो दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट. Yes, realization account should be in double column. We should have inner column and the outer column. That is always advisable. ठीक है? चलिए. So this is realization account. Guys, second account we will have is partners capital account. Shravan, let it remain. ठीक है? If I find people disturbing us, I'll close it off, Shravan. चलिए. Partners capital account. Guys, how many partners do we have in this question? I guess 3 partners. We have Rahman, Wazir, and Adil. So, guys, we will have 3 columns. So, this is going to be my 1, 2, 3. Are we clear? 1, 2, and 3. Chalo. And I'll name them also so that we don't have any confusion as to where we are posting. So we have Rahman, we have Wazir, and we have Adil. We have Rahman, we have Wazir, and we have Adil. And guys, on the last, sir, can we write partner's name in short? Yes, Bharat, you can actually. So you can just write the first names. But if the first names are always starting with everybody starting with A or something, so be very careful about it. Otherwise, you can write them in short. And finally, it's a cash and bank account. So cash and bank account cannot be in double column. It has to be in single column because यहाँ पे हमें कोई details नहीं लिखने हैं.
So this is my debit side of partners cash in bank. This is my debit and credit of partners capital, and this is my debit and credit of realization account. 1, 2, 3, 4, and guys, I will add here for all the working notes. Are we exactly clear with that one? चलो guys, 6 steps मेरे साथ 6 steps repeat करते रहो please. Examination में 6 steps follow करना. Step number 1, transfer liability. Step 2, transfer assets. Step number 3, treatment of assets, treatment of liability, record the expenses, close the books of accounts. Are we exactly clear with that one? So first I'll transfer the assets and liabilities. Guys, all assets should be transferred to realization except for cash in bank. So I can see cash in bank of 8,000. So I will say to opening balance or balance brought down, and cash in bank is 8,000. And all assets will be transferred to realization account. So guys, 2 assets. Now I don't have too much of time today. कल ही एग्जाम है आपका. So guys, मैं टोटल कर रहा हूँ सारे assets का और मैं साथ में पोस्ट कर देता हूँ. So guys, plant and machinery is 30, furniture and fixture is 2, stock is 10,400. Guys, debtors are 18,400. Debtors को gross value पे transfer करना please. 18,400. Joint life policy is 15,000 and patents and trademarks are 10,000. I am getting an answer of 85,800. Can anyone confirm this total is correct or not? And guys, opposite side पे by RDD transfer कर दो. RDD should be treated as a separate liability. So opposite side पे RDD transfer कर दिया. RDD is 400. Clear? Too good. Guys, transfer the liabilities. Capital will go to capital. So by balance brought down. And what is the balance I have? 30,000, 10,000, 2,000. Are we exactly clear with that one? 30, 10, and 2. Guys, every other liability, creditors and loan hypothecation will go to realization. Guys, joint life policy reserve. Reserve will be distributed between the old partners, old ratio. So JLP reserve, and the ratio that we decided, if I'm not wrong, was 4:2:3. Do you all agree with this one? So guys, 12,400 divided by 9 into 4. I'm getting 5511. 5511. Next one, 2756. 2756. And guys, 3, 4133. 4133. Perfect. And guys, next is liability. So I will say by sundry liability. Now what do we have in sundry liability? सर जेएलपी को रियलाइजेशन में नहीं लेंगे. जेएलपी को भी मैंने रियलाइजेशन में ले लिया है भरत. इसके अंदर असेट्स के अंदर आ चुका है वो जेएलपी. जेएलपी रिजर्व्स को अब रियलाइजेशन में नहीं लेंगे. जेएलपी रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. Okay, I have got sundry creditors for 17,800 and loan hypothecation for 6,200. Are we getting a 24,000 of liability? Tell me, is this correct, guys? Yes. Chalo. Perfect. Too good. Now let's treat the assets. So guys, now what are the assets that we have? First of all, एक assets का list बनाते हैं. This is my working note number 3. Guys, working note number 3 is Kamal is saying, sir, can you help me with PDF notes? Komal, I have pinned my Telegram channel का link. Just go to the link, look at the documents and download the अपना final push का page. अगर तुमको चाहिए तो मैं अभी वापस एक बार पोस्ट कर देता हूँ. Tell me, is it done? Guys, everyone got the notes? तो फिर मैं एकदम आराम से चालू कर पाऊंगा. Yes, already pinned on the Telegram and I have already transferred it now. Again. ठीक है, Komal also got it, Vachan also got it, everyone got it. I have transferred it once again on the file and folders, so please check this out. चलिए, guys, working note. अभी assets की बात करते हैं. First one. Guys, सबसे पहले कौन सा asset था? Plant. So what happened to plant, guys? Plant was sold for 17,000.
Which question is going on and which page number? Question number 1, page number 35. So guys, plant is 17,000. Plant के बाद आता है fixture. Guys, fixture realized 1,000. Next one, fixture के बाद आता है stock. Guys, stock realized 9,000. Next one is coming to daters. So guys, daters realized 16,500. Are we exactly clear with that one? Guys, then we have JLP and the patents. So let's think about the JLP and the patents. So what happened to JLP? Guys, first adjustment. Adil has taken a loan from the insurer for 5,000 on security of JLP. The policy was surrendered and insurer paid a sum of 10,200 after deducting 5,000 from Adil's loan and 300 interest thereon. Can anybody give me the journal entry for this? Just read the transaction. Adil had taken a loan from the insurer for 5,000 on security of JLP. The policy was surrendered and insurer paid a sum of rupee 10,200 after deducting 5,000 from Adil's loan and 5,300 interest thereon. चलो पूजा जर्नल एंट्री चाहिए मुझे. Cash and bank account debit. Guys, you are getting cash and bank of 10,200. Guys, Adil had taken a loan on that, so Adil's account will be debited. Are we exactly clear with that one? And Adil का account कितने के लिए debit होगा पता है आपको? Guys, 5,000 का loan और 300 का interest, so that will be 5,300. Ultimately, we'll credit the realization account for 15,700, 15,500. Tell me, anybody having any doubts, they can ask me. Guys, you are getting a cash and bank of 5,000, 10,200. Adil's loan will be debited for 5,300 and realization account will be credited for 15,500. Are we all clear with this, guys? Tell me that. Sir, 10,200 कैसा है? भरत, वो तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि पॉलिसी वाज सरेंडर एंड इंश्योर पेड अ सम ऑफ 10,200. सो हमें 10,200 मिला. आदिल के लोन के वजह से हमारा 5,300 कट गया, तो आदिल का अकाउंट डेबिट करेंगे. तो एक्चुअली जीएलपी से कितना पैसा मिला पता है हमें? 15,500 रुपीज मिला. ठीक है भरत, यू एक्चुअली गॉट 15,500, बट आपके हाथ में कैश आया सिर्फ 10,200 का एंड 5,300 वाज आदिल का लोन. क्लियर? Yes, ever you can adjust the JLP reserve against the JLP also, but this is more simple. मेरे हिसाब से सारे reserves को partners में distribute कर दो, old ratio, और फिर JLP को अलग से treatment करो. So ये JLP की कहानी हो गई. Next one guys, एक और asset बचता है हमारा patent. So let's think about patent का क्या हुआ. ठीक है guys, patent. One of the creditor took some patent whose book value was 6,000 at a valuation of 4,500. Guys, patent की value मैं लिख देता हूँ पहले 10,000. 10,000 में से गाइस जो 6,000 का पेटेंट था वो 4,500 के वैल्यू पे कोई क्रेडिटर लेके गया. सो गाइस कैन आई से हमारा 6,000 का पेटेंट निकल गया. नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वाज पेड इन कैश एंड गाइस पेटेंट नाउ 50% ऑफ द बुक वैल्यू आ रहा है. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेटेंट 4,000 था गाइज, उसका 50% ऑफ द बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन हुआ. सो कैन आई से फाइनली पेटेंट वाज रियलाइज्ड ओनली 2,000. सो यहाँ पे लिस्ट में लिख लेता हूं मैं पेटेंट रियलाइज 2,000. आर यू ऑल अग्रीइंग टू इट? दिस इज अ नाइस वे ऑफ एडजस्टिंग ऑल द एसेट्स. सॉर्टेड गाइज? अभी ये देख लो कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था कि नहीं. गाइज एक ऑल अनरिकॉर्डेड एसेट था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पॉइंट नंबर 3, the firm had previously purchased some shares in joint stock company and had written off them as loan. The shares are now found to be worth 3,000 and the loan creditor has agreed to accept that as this value. Guys, ये जो unrecorded asset था वो loan creditor लेके गया, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है. So we are done with this. Let's take a total guys please. Asset से इतना पैसा आया और JLP का एंट्री ये था. So guys 17,000 plus 1,000 plus 9,000 plus 16,500 plus 2,000. I'm getting a total of 45,500. 45,500. Guys, this is asset sold. Entry क्या आएगा asset sold का पता है? Bank account debit to realization 45,500. So bank account के debit side पे लिखेंगे to realization 45,500. Realization के credit side पे आप लिखेंगे by bank. एंड गाइस प्लीज एग्जामिनेशन में सारी डिटेल्स लिखना, डेटर स्टॉक ये वो सब कुछ. यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्टली उसे पोस्ट कर रहा हूँ आउटर कॉलम में 45,500. अदरवाइज इन दी
एग्जामिनेशन यू विल हैव टू राइट द एंटायर अमाउंट. राहुल 43,500 नहीं आ रहा है, 45,500 आ रहा है. टोटल चेक कर लो राहुल. पेटेंट का 2000 ऐड किया बेटा? Yes. Akshita, you can write the assets and liability in short. 10,000, 1,000, 9,000, 16,500 and 2,000. 45,500 I am getting. और एक एंट्री पास करना है कैश एंड बैंक आदिल टू रियलाइजेशन. सो कैश एंड बैंक में 10,200 यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन 10,200. आदिल को डेबिट करना है टू रियलाइजेशन 5,300 के लिए आदिल को डेबिट करना है. एंड गाइस रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक एंड आदिल एंड जीएलपी का अमाउंट था. अमाउंट वाज 15,500. आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? 15,500 था. टू गुड. सो गाइस दैट मीन्स हम लोग ने असेट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया. That's what I'm saying. Step number 1, transfer assets. Step number 2, transfer liabilities. Step number 3, treatment of assets. Now, step number 4 पे जाते हैं treatment of liability. So, guys, this is my working note number 2, and we are talking about treatment of liability. चलो, guys, liability में क्या था आपके पास? Guys, सबसे पहले आपके पास था liability में creditor. ठीक है. अब creditors कितने वैल्यू के थे guys बुक में? We had creditors for 17,800. Guys, if I'm not wrong, creditor सबसे पहले तो ये 4,500 का पेटेंट लेके जा रहा है. So guys, 4,500 के वैल्यू पे आपने उसे पेटेंट दे दिया. बात खत्म हो गई. Next one, the balance of creditors were paid in cash. The balance of creditor बचा कितना? 17,800 minus 4,500. Is it 13,300 बचा creditor? है ना? And guys, adjustment number E says the liabilities were paid and a total of discount of 500 was allowed on creditor. Guys, इस पे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको. So guys, 13,300 minus 500 रुपए का डिस्काउंट. Is it 12,800 हमने क्रेडिटर को पे कर दिया? Too good. Guys, दूसरा था एक लोन. And how much was the loan, guys? My loan was 6,200. अब वो लोन को गाइस सबसे पहले तो हम लोग ने 3,000 के शेयर्स दे दिए. अनरिकॉर्डेड जो शेयर्स थे वो तो शेयर्स चले गए, उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बैलेंस बचेगा 3,200. डू यू अग्री विद दैट वन? गाइस उसको हम लोग ने कैश पे किया और कुछ भी नहीं था. सो गाइस इसको हमने कैश पे कर दिया 3,000. सो गाइस हाउ मच इज द टोटल अमाउंट दैट यू पेड? It was 12,800 plus 3,200. Is it 16,000? Do you all agree that I paid 16,000 rupees, guys? Yes. चलिए. So 16,000 guys एंट्री आएगा रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक एंड द अमाउंट इज 16,000. और कैश एंड बैंक अकाउंट में आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? 16,000. कीर्तिना इज सेइंग सर लोन बता दो प्लीज से एक बार. बेटा लोन देखो कीर्तिना 6,200 का था. उसमें से 3,000 के वो लोग अनरिकॉर्डेड शेयर्स लेके गए, तो उसका टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है. 6,200 में से 3,000 के शेयर्स चले गए तो बैलेंस बचा 3,200. सो कीर्तिना द अमाउंट पेड इज 3,200 प्लस 12,800 इज 16,000. कीर्तिना टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? यस सर. चलिए, लोन बैलेंस पे करने का नहीं बताया ना इन कैश. अर्शद लायबिलिटीज तो बेटा पे करना ही पड़ेगा ना आपको कैश में. असेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है. बट अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया अर्शद तो हमें उसे बुक वैल्यू पे सेटल करना पड़ेगा. हाउ कैन लायबिलिटी बेटा कैन बी फॉरगॉटन, है ना? चलिए, सो 16,000 पे हमने लायबिलिटी को पे कर दिया. स्टेप नंबर 4 हो गया. व्हाट इज स्टेप नंबर 5 गाइस? एक्सपेंसेस. कैश एंड बैंक में लिखा हम लोग ने 10,000, रियलाइजेशन 16,000 और यहाँ पे 16,000. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज 2,300. सो गाइस यहाँ पे फिर से एक बार टू कैश एंड बैंक, यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,300 गाइस. और ये अकाउंट के अंदर एक्चुअली आपको सारी डिटेल्स लिखने हैं, हाँ, इसीलिए डबल कॉलम में बनाने को बोला मैंने आपको. 2,300. कैश एंड बैंक में फिर से एक बार लिख दो बाय रियलाइजेशन एंड द अमाउंट कम्स टू 2,300. आर वी सॉर्टेड गाइस? नेक्स्ट वन, we'll close the realization account guys. So let's close the realization. चलिए guys, 400, 24,000, 45,500, 15,500. I'm getting 85,400, 85,800 plus 16,000 plus 2,300. I'm getting 1,04,100. Sir Ram's loan.
अच्छा गाइस, राम्स लोन भी पे करना है, सॉरी मैं भूल गया था। एक मिनट रुक जाओ गाइस, राम्स लोन हम लोग ट्रांसफर करना ही भूल गए, वो ऊपर था, सॉरी माय एरर। हाँ, इट शुड बी ट्रांसफर्ड लाइक एनी अदर लायबिलिटी गाइस बाय राम्स लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, 15,000। एंड गाइस उसको पे भी करना है टू कैश एंड बैंक। राम्स लोन को पे करेंगे हम लोग 15,000। Clear? Jeel, can we write the journal entry instead of ledger accounts in working notes? Yeah, Jeel, that is okay. Working notes is okay. Clive, working notes are compulsory exam, or we can remember the adjustment and note down in pencil. Clive, it's better to show the working notes in examination. Are we exactly clear? Nobody 24,000 में include क्या क्या किया है? Nobody 24,000 में creditors और loan include किया था, loan on hypothecation। हम लोग राम्स लोन लेना भूल गए थे, राम्स लोन ऊपर था इसीलिए हम लोग भूल गए थे। तो कैश एंड बैंक में टू रियलाइजेशन 24,000। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग नाउ? चलो टेक अ टोटल नाउ गाइस। 85,800 plus 16,000 plus 2,300 plus 15,000. I'm getting a total of 1,19,100. Instead of realization account directly, can we show the Ram's loan account in cash ever? Then you'll have to prepare separate Ram's loans account. अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा एवर, प्लीज अवॉइड करो। तीन ही अकाउंट बनाओ, तीन से ज्यादा अकाउंट मत बनाओ, मेरा सजेशन। 400 minus 24,000 minus 45,500 minus 15,500 minus 15,000. Guys, I'm getting a loss of 18,700. Confirm whether we are getting a loss of 18,700. Ram, Wazir and Adil. चलो, राम, वजीर एंड आदिल। चलो गाइस, 18,700 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे? इन द रेशियो ऑफ 4:3। सो डिवाइड बाय 99 into 4। गाइस, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 8311 2 4156 and guys 36233। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइस कैलकुलेशन एक बार चेक करना। 8311 plus 4156 plus 6233। आई एम गेटिंग 18,700। Yes, GLP, many of them have a practice of transferring it to PN, अपना partners capital also, but please avoid all this. मैं तो GLP को एक asset treat करता हूँ, GLP reserve को एक reserve treat करता हूँ। This is the simplest way I am teaching you today, guys. You know, मैंने स्टडी मटेरियल्स देखे हैं, मैंने अदर एजुकेटर्स को देखा है, बहुत मैसअप करता है। गाइस 6 स्टेप में याद रखो ना पूरा चैप्टर, इतना इजी करके रखा है मैंने आपके लिए। ट्रांसफर असेट्स, ट्रांसफर लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ असेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड क्लोज। Close the realization account, transfer the balance to partners capital, close partners capital, transfer the balance to cash and cash and bank account must tally. Chakas. चलिए 8311। So I will say buy realization account 8311। Next one 4156 4156 and guys last one 6233 6233। Done guys। चलो close the partners capital and take the total। अच्छा डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है, सॉरी डेबिट साइड पे लिख देता हूं मैं, ये रब करके लॉस था ना टू रियलाइजेशन। चलिए गाइज 8311 8311 4256 4156 4156 and guys last one is 6233। am I correct now guys? 6233। चलिए बंद कर देते हैं अभी इस अकाउंट्स को एंड कैश एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। परफेक्ट पूजा। हाँ गाइस, अगर बहुत बड़े डाउट्स है तो प्लीज क्वेश्चन ब्लॉक में रखो। आई कैन नॉट रीड पीपल हु आस्क मी द डाउट राइट नाउ, बहुत बड़ा डाउट है। 35 minus 8311। गाइस पार्टनर्स कैपिटल राम में बैलेंस आ रहा है मेरा 27,200। एम आई करेक्ट? नेक्स्ट वन I'm getting a balance of 8,600 Vachan perfectly। and guys third one का डेबिट बैलेंस दिख रहा है मेरे को guys 5,400 डेबिट बैलेंस। Are we exactly clear with that one? Too good. This is closing। So 27,200 8,600। This is Ram, this is Wazir
वजीर का बैलेंस दिख रहा है मुझे 8,600, 8,600। और गाइज आदिल का जो डेबिट बैलेंस था इज 5140, 5,400, 5,400। Nobody, I'll show you, but let me tally this amount right now. I love to tally my answers. Guys, total 8,000 plus 45,500 plus 10,200 plus 5,400. I'm getting an answer of 69,100. 69,100. Tell me, does it tally, guys? $24,000. रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे लिखा था ना 24,000. Guys, does it tally? Tallied, na? 16,000, 2,300, 24,000, 27,200. मैंने कुछ लिखना भूल गया हूँ गाइस, कोई चीज. Sir, it was 15,000 and not 24,000. Okay, this one, guys, you're talking about this one. Ram's loan. Okay, 15,000. 15,000 for Ram's loan, guys. Okay, too good. Tell me, does it tally now? 16,000, 2,300, 15,000, 27,200, and 8,600. Tell me, Jakas, guys. Lovely. Chalo. Sir, बाकी chapters कब कराओगे? Like NBFC, Parul. I got to know that. Sir, this class is both for inter and IPCC. Yes, Khushbu, this class is both for inter and IPCC. Can we send JLP reserve in realization account? No, Neha. JLP reserve account cannot go to JLP. JLP reserve account has to go to partners, old partners in old ratio. Tell me, Jakas, guys, are you done with the question? Too good. Guys, एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग इस पे कि मैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाऊं. Are you comfortable? कनिका, आपका डाउट क्वेश्चन ब्लॉक में जाएगा. आई कैन नॉट सी योर डाउट्स. Nobody wants to see the realization account. Okay, nobody, this is the realization account. Sir, JLP reserve is like general reserve. Yes, Maheshwari, Bharat, JLP reserve is like reserves, any other reserves. ठीक है? Too good. Guys, Jakas bolo please. So can we expect resolution in exam or any other question? Kirtina, don't expect anything in examination. Everything can be possible. ठीक है? मेरे को 6 स्टेप्स रिपीट करो डिसोल्यूशन के, अगर आपको एक और क्वेश्चन नहीं करना है. पर गाइज, मैंने ये जो बुक में जितने भी क्वेश्चंस डाले, आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे एटलीस्ट. ठीक है? सो आई एम डन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डाल के रखा है, आप खुद प्रैक्टिस करके जाओगे गाइज वो क्वेश्चन, प्लीज. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एंड क्वेश्चन नंबर 3 आई विल बी सॉल्विंग नाउ. चलिए. Clive, miss the whiteboard. Okay, Clive, I miss so many things right now. Guys, 6 steps. Step number 1, transfer assets. Step number 2, transfer liability. Step number 3, record PC. Step number 4, realize PC. Sorry, PC पे कहाँ चला गया? Amalgamation की थोड़ी बात कर रहा हूँ. Step number 1, transfer assets. Step number 2, transfer liability. Step number 3, treatment of assets. Step number 4, treatment of liability. Step number 5, expenses. Step number 6, close. Close the realization, transfer the balance to partners capital. Close partners capital, transfer the balance to cash and bank. Cash and bank account must tally. Tell me, guys, anyone having any doubts? If the answer comes different from the study material for realization and with the way we are doing, but cash account tallies, will they deduct marks? No, Kanika, they will not deduct the marks. Don't worry, beta. Are we exactly clear with that one? Too good. चलो guys, that's what I'm saying. ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, प्लीज. आज ही प्रैक्टिस करोगे. ठीक है? Akshita, sir, is it necessary to make a deficiency account? Akshita, if all partners are insolvent, you'll have to make a deficiency account. Otherwise, your deficiency account won't tally. Guys, Garner versus Murray rule applies when one or more partners are insolvent. Now, this is a revision session, so I cannot take everything, वरना हम पूरे दिन सिर्फ dissolution करते रहेंगे. Are we exactly clear with that one? Ever. Which model can we expect for examination in partnership? Ever. Since years, I have learned one thing is not to predict CA inter ka paper and CA ka any damn paper.
Whatever you expect will never come. Whatever you don't expect will come at question number 1. So please don't expect. Are we clear? Too good. Guys, one gentle reminder to all the people who are watching the lecture on YouTube right now is please shift to Unacademy app, because we'll be continuing the lecture after 9 o'clock only on Unacademy. ठीक है? Guys, let's start. Piecemeal distribution. चलिए. Now this is piecemeal distribution. So guys, here is the place where I will add the slide. So guys, chapter number 2 for today. So this is my chapter 2 for today, and that is known as piecemeal distribution. In study material, they put everything into the one chapter, guys, but we better put it as two different chapters. Examination में guys, they can either ask you piecemeal distribution or they can ask you normal dissolution का question. Now one thing is certain that दोनों chapter में से एक question नहीं आ सकता, because दोनों ultimately belong करते हैं किसको? Dissolution को. Guys, piecemeal. Now you tell me, does anybody know the schedule for the payment? Guys, how do we pay? सबसे पहला payment किसको जाता है, फिर payment किसको जाता है? Tell me that. Schedule for payment. चलो. श्रवण, liquidators expenses यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, because partnership में there are no liquidators. Are we exactly clear with that one? तो श्रवण, हम लोग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. पार्टनरशिप में पहला पेमेंट किसको जाना चाहिए? गाइस, फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे होने चाहिए. परफेक्ट है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे होने चाहिए सबसे पहले. गाइस, सेकंड पेमेंट जाना चाहिए सिक्योर्ड लायबिलिटी को. सेकंड पेमेंट जाना चाहिए सिक्योर्ड लायबिलिटी को. टू गुड. गाइस, थर्ड पेमेंट जाना चाहिए अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को. अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को. गाइस, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को किस में जाएगा? गाइस, रेशियो ऑफ देयर बैलेंसेस. रेशियो ऑफ बैलेंसेस में जाना चाहिए. गाइस, फोर्थ पेमेंट जाना चाहिए पार्टनर्स लोन को. फोर्थ पेमेंट जाना चाहिए पार्टनर्स लोन को. एंड गाइस, फिफ्थ पेमेंट जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल को. फिफ्थ पेमेंट जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल को. गाइस, पार्टनर्स कैपिटल को पे करने के लिए कितने मेथड्स है अपने पास? हाउ मेनी मेथड्स डू वी हैव टू पे पार्टनर्स कैपिटल? गाइस, टू मेथड्स. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव? व्हाट इज द फर्स्ट मेथड नोन एज, गाइस? excess capital method. Guys, excess capital method is also known as highest relative capital method. Highest relative capital method. Be exactly clear with that one. And guys, second method is known as what, guys? Maximum loss method. Maximum loss method. Are we exactly clear with that one? So guys, ये base याद रखना है आपको examination के point of view से. First one, guys, you should be making a payment for realization expenses. Second one, secured liability. Third one, unsecured liability. Fourth one, partners loan. And fifth one, partners capital. Partners capital should be paid in excess capital method or maximum loss method. Are we exactly clear? Guys, if the question is silent, then you better follow excess capital method. ठीक है? Schedule for payment clear है? I will do one question with both the methods. I'll do one question with excess capital method and I will do one question with maximum loss method. Are we clear, guys? Chaliye, I'm picking up this question, guys. Let's zoom it off. First one. Ajay Enterprises is a partnership in which A, B, and C are three partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. The balance sheet of the firm as on 31st of December 2011 is as follows. A's capital, B's capital, C's capital, B's loan, creditors. Assets may we have factory building, plant and machinery, debtors, stock, cash. On the balance sheet date, all three partners have decided to dissolve their partnership. Since realization of asset was protected, they decided to distribute the amount as and when feasible. And for this purpose, they appointed C, who was to get a remuneration of 1% of value of asset realized other than cash in bank and 10% of the amount distributed to the partner. So guys, C is appointed as the person who will handle the entire dissolution. He is going to get remuneration of 1% on the value of assets realized. And guys, he is going to get 10% on the amount distributed to the partners. Are we exactly clear? Guys, this amount which is paid to C should be over and above his capital.
तो ये उसके कैपिटल में मत डालते रहना. दिस आर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस गाइस, टू बी फेयर इनफ. ठीक है guys, first installment, second installment, third installment, last installment. Dissolution expenses were provided for, amounted to 3,000. So dissolution expenses 3,000. And guys, creditors were finally settled for 15,900. क्रेडिटर्स को 15,900 पे हम लोग ने सेटल कर दिया. और उसके बाद कुछ नहीं है. उसके बाद उन्होंने कहा है मैक्सिमम, हाँ, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो. सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट फॉर एक्सेस कैपिटल बनाएंगे. Are we exactly clear with that one? So I'm solving question number 3. Here I will add. Sir, if the provision made for expenses, then what treatment क्या होगा? भरत, मैं पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा ना बेटा आपको. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लायबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नोबडी, क्वेश्चन ने दिया होगा हमें एग्जामिनेशन में कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा अनसिक्योर्ड है. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, फर्स्ट वन, स्टेटमेंट फॉर एक्सेस कैपिटल हम लोग बनाएंगे. सो स्टेटमेंट फॉर excess capital. Are we exactly clear with that one? And guys, we have three partners, A, B and C. We have A, B and C. So guys, we start with A, that is opening balance. Guys, opening balance कितना था? 7,515. So 7,515. Guys, if there are any reserves, please add up. If there are any losses, please subtract them. Reserves should be added, losses should be subtracted. Are we exactly clear with this one, guys? उसके बाद जो बैलेंस आता है उसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं. Guys, B, PSR. What is the PSR they have given to? 433. 433. Guys, C, unit capital. कैसे मिलेगा आपको यूनिट कैपिटल गाइस? 15,000 डिवाइडेड बाय 4. चलो 15,000 डिवाइडेड बाय 4, 3750. 2,500 and 15,000 डिवाइडेड बाय 3. रिजर्व्स ऐड होंगे, डिडक्ट क्या होगा? रिजर्व्स ऐड होंगे, लॉसेस डिडक्ट होंगे. नोबडी, अगर हमारे पास असेट में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो डिडक्ट हो जाएगा. एंड दिस इज 5,000. गाइस, डी, रिक्वायर्ड कैपिटल. और जो सबसे लोएस्ट है उसको बेस लेंगे, 20 कैपिटल को बेस लेंगे. आप अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइस, 2,500 हमारे लिए बेस बन गया. और अब हम ये बेस को मल्टीप्लाई करेंगे इनके कैपिटल से. सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से. 2,500 इंटू 4 कम्स टू 10,000. 7,500 एंड 7,500. गाइस, सब्ट्रैक्ट दिस. तो फिर से तुम लोग आ जाते हो ए पे. नाउ व्हाट इज ए? एक्सेस कैपिटल. दैट इज गाइस ए माइनस डी. तो मुझे कोई कहता ना, लिसन टू माई लैंग्वेज वेरी वेल. Guys, if somebody says what is statement of excess capital, I say A, B, C, D, A, B, C, D. A, opening capital. B, PSR. C, unit capital. D, required capital, taking the lowest capital as base. And then again we fall back to A. What is A again? Excess capital, that is A minus D. So 15,000 minus 10,000, answer comes to 5,000. This is wiped out and this comes to 7,500. Now repeat the cycle. अब ये cycle है, आपको इसे repeat करना है. ठीक है? So guys, B, PSR. What is the PSR that we have? 4, 3. Guys, C, the unit capital. What is the unit capital we have? 1,250, 2,500. Guys, D, required capital. किसका required capital आएगा guys? 1,250 is the base. Multiplied by 4 करेंगे, multiplied by 3 करेंगे. So if I am not wrong, can I say 5,000 आ जाएगा? And 1,250 into 3. So 1,250 into 3. Guys, answer is 3,750. And guys, subtract karo 7,500 minus 3,750. So is it 3,750 guys? A, B, C, D, A minus D, A, B, C, D. Tell me everyone, are you getting this? Yes. Fantastic. Wonderful. Guys, अब आप मुझे बोलो पेमेंट शेड्यूल. फर्स्ट पे किसको करेंगे? गाइस, फर्स्ट पे किसको करेंगे हम लोग? सी को 3,750 करेंगे. सेकेंड पे किसको करेंगे गाइस? ए एंड सी को. ए को करना है 5,000. मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोग को. ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस. चलो, आई एम एडिंग अ स्लाइड.
So guys, first pay to A, नहीं, first pay to C, 3750. Guys, second pay to A and C. A को 5000, C को 3750. Total comes to 8750 in the ratio 4:3, if I'm not wrong. And guys, third, rest in PSR. Tell me, किसी को statement for excess capital में कोई doubts है? Or can I progress ahead? Too good. No. So guys, remember my logic. A, B, C, D, A, B, C, D. Are we exactly clear with that one? Search 3750. I've written 3750 only. सर इन सेकेंड पेमेंट फर्स्ट पेमेंट लेस होगा ना? नहीं भरत, फर्स्ट पे लास्ट लाइन जो आता है वो फर्स्ट पे होता है और सेकेंड लास्ट लाइन जो आता है वो सेकेंड पे होता है. रिया 7,500 minus 3750 बेटा. 7,500 minus 3750, that will be 3750. First pay, last line. Second pay, second last line. Did you understand, Riya? Did you understand ever also? Okay, too good, Riya. चलिए guys, now let's start making a payment. Let's start making a schedule. अभी देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है. Guys, लास्ट आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल. लास्ट कॉलम आना चाहिए अपना पार्टनर्स कैपिटल. So guys, we have A, we have B, we have C, ABC. गाइस उसके बाद आ रहा है अपने पास पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन के बाद आ रहा है अपने पास क्रेडिटर्स. इनफैक्ट मेरे को थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो आई विल जस्ट मेंटेन द स्पेस. सो दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A. गाइस देन वी हैव पार्टनर्स लोन. पार्टनर्स लोन के बाद हमारे पास कैपिटल है, फिर टोटल लायबिलिटी का एक कॉलम आएगा, फिर एक कैश का कॉलम आएगा. ये सारे कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे. सो गाइस फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं. दिस इज माय कैश, दिस इज माय टोटल लायबिलिटी, दिस इज माय क्रेडिटर, दिस इज माय पार्टनर्स लोन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. टेल मी गाइस, आर यू ऑल एडिंग दिस अप प्रॉपर्ली? गाइस ओपनिंग से चालू करते हैं. हाउ मच इज ओपनिंग कैश? वी हैड 275. गाइस हाउ मच वाज टोटल लायबिलिटी? 58,500 वाज माय टोटल लायबिलिटी. Statement is known as statement of piecemeal distribution of cash. वचन टाइटल पे लिखोगे statement for piecemeal distribution of cash. Guys, creditors are 16,500. Profit and अपना partners loan. B's loan is 4,500. Guys, A's capital is 15,000. B's capital is 7,500 and C's capital is 15,000. Are you understanding this now? This is B's loan. ठीक है, चलो. कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग गाइस? आर यू ऑल रेडी? चलो गाइस, सबसे पहले रियलाइज्ड. फर्स्ट रियलाइजेशन, हाउ मच डिड यू रियलाइज? इज इट 18,650 दैट यू रियलाइज्ड? चलो गाइस, टोटल 275 plus 18,650. Guys, answer comes to 18,925. Are you understanding? 18,925. Guys, minus expenses सबसे पहले. How much did you provide for the expenses? 3,000. So 3,000 पहले expenses निकाल दो. Guys, 19,000 में से 3,000 expenses निकाल दिया तो आंसर आ गया 15,925. Guys, अब अगर आपको याद हो तो C को हमने एक अपॉइंट किया था रेम्यूनरेटर. उसको 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट रियलाइज देना था. 1% ऑफ असेट्स. Guys, 1% ऑफ व्हाट अमाउंट? 18,650. 18,650 का 1%. गाइज 18,650 का 1%. गाइज आई एम गेटिंग 186.5, so I'll give him 187. अभी एग्जैक्टली क्लियर? सूरज, कैन वी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट 375 बिफोर द फर्स्ट रियलाइजेशन? सूरज 375 डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाओगे बेटा, बिकॉज आपका पहले एक्सपेंसेस ही 3,000 है, तो आप 275 कहां से डिस्ट्रीब्यूट करोगे सूरज? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना सूरज? So 15,925 minus 187. Guys, I am getting an amount of, Satyam, which topic sir? Piecemeal distribution. 15,738. Guys, creditors को कितना पे करना है फाइनल सेटलमेंट में? क्रेडिटर्स वे पेड 15,900. गाइस 15,900 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम जितना है उतना पे कर देंगे. सो लेस क्रेडिटर
15,738 क्रेडिटर को पे कर दो। गाइस टोटल लायबिलिटी से 15,738 निकालो एंड क्रेडिटर से भी 15,738 निकाल दो क्योंकि पैसा खत्म हो गया हमारे पास। सो गाइस योर कैश बैलेंस हैज नाउ गॉन नील। टोटल लायबिलिटी में से 15,500 माइनस 15,738, आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 42,762। नेक्स्ट वन 16,500 माइनस 15,738, आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 762। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? नहीं, एवर 162 मत लिख देना, बैलेंस 762 लिखना। अब देखना मैं क्रेडिटर को कैसे सेटल करता हूं, ठीक है गाइस? सेकंड रियलाइजेशन, हाँ मुझे सेकंड रियलाइजेशन दैट यू हैव 17,320, इसमें से आप मेरे को बोलो पहले पैसा किसको देना पड़ेगा 17,320 में से? व्हाट इज द फर्स्ट मनी दैट यू विल पे टू हुम? नहीं 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 श्रवण, नहीं राहुल, एवरीबडी रॉन्ग गाइस। 1% पे करना पड़ेगा ना पहले, हाँ लेस 1%। गाइस 17,320 का 1% आंसर कम्स टू 173.2, दैट इज 173। गाइस कैलकुलेटर, 17,320 माइनस 173, आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 17,147 लेस क्रेडिटर। अब आराम से तुम देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है? लिसन टू मी प्रॉपर्ली। 762 लिखूंगा यहाँ पे, बट एक्चुअली हम लोग को 15,900 पे सेटल करना था, 16,500 का क्रेडिटर, मतलब कहना है 600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। गाइस जस्ट लिसन क्या लिख रहा हूं। कैश से 162 माइनस करूंगा, बट टोटल लायबिलिटी से 762 माइनस करूंगा और क्रेडिटर से 762 माइनस करूंगा, बट कैश से सिर्फ 162 माइनस करूंगा। टोटल लायबिलिटी से 762 माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर से भी 762 माइनस हो जाएगा। आर यू कैचिंग दिस अप एवरीवन? Too good? Surely? Jackass. This is the way you have to show. You know, मैंने कभी कभी देखा है एग्जाम एजुकेटर्स को, दूसरे एजुकेटर्स को, कि यहाँ पे वो 15,900 लिखते, 16,500 की जगह पे 15,900 से स्टार्ट करते हैं। बट डोंट डू दिस, ये गलत हो जाएगा यार। आपको चालू करना है 16,500 से ही। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? पर नहीं भरत, यही नहीं करना है, टेक्निकली रॉन्ग है, एग्जामिनेशन में मार्क्स कटते हैं। भरत क्रेडिटर को पे करने का एंट्री क्या बनेगा पता है आपका? क्रेडिटर टू बैंक टू डिस्काउंट। क्रेडिटर कितने से माइनस होगा? 762। बैंक से कितना जाएगा? 162। डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा 600। तो आप यहां से कैश से माइनस करेंगे 162 और क्रेडिटर से माइनस करेंगे 762। आर यू ऑल क्लियर विद दिस एडजस्टमेंट गाइस? टेल मी। जकास जकास बोलो सब लोग, चलो फटाफट पहले। टू गुड। नोबडी सेज 600 कैसे आया? नोबडी। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे क्रेडिटर्स आर 16,500 बेटा, एंड दे आर सेटल्ड एट 15,900। सो 16,500 माइनस 15,900, 600 रुपए का डिस्काउंट। वाली नॉट एडेड बैक, सब्ट्रैक्टेड बेटा। 162 कैश से माइनस होगा। ठीक है Kunal, in solution 600 is transferred to profit and loss account. Kunal, that's okay. They are correct. Too good. चलो अब आगे जाते हैं गाइस। 17,147 में से 162 निकाल देता हूँ। 17,147 में से 162 निकल गया, 16,985 बच रहा है। सो आई विल एड अ स्लाइड देयर। मैं वापस यहाँ पे कॉलम बनाते रहूंगा गाइस। सो दिस इज माई ए, दिस इज बी, दिस इज सी, this is partner's loan, this is total liability, this is cash. guys मैंने क्रेडिटर का कॉलम हटा दिया, ठीक है? कैश में बच रहा है 16,985। गाइस टोटल लायबिलिटी में कितना बचेगा अभी? 42,000 है ना? गाइस पार्टनर्स लोन कितना बचा है अपना? 4,500, and then we have a balance of 15,000, 7,500 and 15,000. guys are you all catching this up properly? सर एग्जाम पे पेज खत्म हो जाए तो सेटल हो गया, वो आते नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं एज यू डिड। यस कनिका, करना ही पड़ेगा अपने पास, एग्जामिनेशन का पेज भी इतना ही छोटा होता है। चलो अभी किसको पे करेंगे? कहना इसे 20 लोन को सेटल कर देंगे। 4,500, 4,500, 4,500, 20 लोन सेटल हो गया। चलो माइनस कर दो, बैलेंस निकालो अभी।
16,985 minus 4,500. Am I getting 12,485? 42,000 minus 4,500, 37,500. और ये बैलेंस खत्म हो गया। गाइस अब पार्टनर्स पे आ गए हो। पहले कौन से पार्टनर को पे करना था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, पहले मुझे पे करना था 6, पहले 7 कॉलम थे। हाँ, जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाओ और जो कॉलम खत्म हो जाए उसको आप निकाल सकते हो नेक्स्ट पेज पे कैरी ओवर करने के लिए। 3750 टू सी। अच्छा, नाउ गाइस बिफोर यू पे 3750 टू सी, इफ यू रिमेंबर सी को 2 रेम्यूनरेशन देने थे। गाइस सी को रेम्यूनरेशन देना था, एक तो 1% ऑन द असेट एंड 10% ऑन एनी अमाउंट गिवन टू पार्टनर। तो गाइस इफ यू अग्री टू मी, अब ये जो अमाउंट है ना गाइस, दिस इज 110%। इस अमाउंट के अंदर पार्टनर्स को देने का पैसा भी है और 10% सी को जो रेम्यूनरेशन देना है वो भी है। सो 12,485 इज 110% गाइस। तो सबसे पहले आप सी को रेम्यूनरेशन दोगे और उसके रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन देखो, मैं कर रहा हूं, आराम से देखना। लेट्स सी टू रेम्यूनरेशन कैसे करना है। 12,485 into 10 divided by 110. Are you understanding this? 12,485 into 10 divided by 110. Guys, I am getting an amount of 1135. Are you all getting this 1135? Tell me yes or no. I hope you understood. And that's very simple. So guys, 12,485 minus 1135, I am getting an answer of 11350. एंड गाइज मिस्टेक से ये 1135 सी के कॉलम में नहीं लिखना। सी रेम्यूनरेशन लेके जा रहा है, सी के कॉलम में नहीं लिखना। अच्छा, अब हम लोग फर्स्ट पे करेंगे सी को 3750। आर वी क्लियर? सर कैन यू रिपीट अबाउट सीज रेम्यूनरेशन? अर्चना, सी को 2 रेम्यूनरेशन मिलने थे। फर्स्ट रेम्यूनरेशन वाज अर्चना 1% ऑफ द असेट रियलाइज्ड एंड सेकेंड रेम्यूनरेशन अर्चना वाज 10% ऑफ एनी अमाउंट गिवन टू पार्टनर। बेटा अभी ये जो 12,485 है ये पार्टनर को देने वाले हो, जो भी पार्टनर को दोगे उसका 10% सी को देना है। तो अर्चना ये जो अमाउंट है ना हमारे लिए 110% बन गया। तो अब हम लोग सी का रेम्यूनरेशन निकालेंगे। 12,485 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। इसके अंदर 10% है बट टोटल 110% है। समझा अर्चना? टेल मी यस नाउ। Okay, got it. Too good, Archana. You don't need to tell me got it, Archana. Tell me Jackass, beta. 11,350 minus 3750. I'm getting an answer of 7,600. Thank you, Archana. Now tell me, guys, 7,600 किसको जाएगा? Guys, second पे था आपका 7,8750, पर हमारे पास तो सिर्फ 7,600 ही है। So guys, second पे जाएगा A और C को कौन से रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। Do you agree? 7,600। परफेक्ट शीतल। टोटल लायबिलिटी से 7,600 माइनस करो, ये तो खत्म हो चुका है। 7,600 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, गाइस 4,343 टू ए। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? आई एम नॉट सीइंग द स्टूडेंट्स क्वेश्चन विच यू आर रिप्लाइंग। पीएस दैट्स ओके, दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। 7,600 माइनस 4,343, आंसर कम्स टू 3,257. शिवांकी, जस्ट चेक द अमाउंट बेटा, रॉन्ग आ रहा है तेरा अमाउंट शायद। 3,257 अमाउंट आ रहा है मेरा। चलो, नाउ व्हाट इज द बैलेंसेस दैट यू आर गेटिंग? कैश खत्म, 37,500 माइनस 7,600, एम आई गेटिंग 29,900? Guys, 15,000 minus 4,343, my balance comes to 10,657. My balance comes to 7,500. And guys, 15,000 minus 3,257, my answer comes to 11,743. Are we getting this, guys? Am I correct? Too good. Devika, tell me what's your doubt? 3750 माइनस नहीं किया। सॉरी 3750 कहाँ से माइनस नहीं किया? सी से माइनस नहीं किया। 3750 सी से माइनस नहीं किया था मैंने। चलो, सो दिस कम्स टू 15,000, दिस कम्स टू 7,500 एंड 15,000 माइनस 3750, आंसर कम्स टू 11,250 माइनस 3,257, माय आंसर कम्स टू 7,993। हाँ, और यहाँ से भी मैंने 3,750 माइनस नहीं किया है।
सो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कर देता हूं मैं। वेट अ मिनट गाइस, चलो 37,500 minus 3750 minus 7,600 guys, am I getting a balance of 26,000? नहीं, रेम्यूनरेशन नहीं होगा ऑफ कोर्स। अजय, रेम्यूनरेशन टोटल लायबिलिटी में कहाँ था बेटा? सो दिस विल बी 26,150 and 11,250 minus 3,257, answer comes to 7,993 7,993 plus 7,500 plus 10,657, it's 26,150. Are you all getting this guys? Tell me yes or no. Yes, too good, beautiful, जकास, वंडरफुल पूजा। चलिए गाइज, अब जाते हैं हम लोग थर्ड रियलाइजेशन। व्हाट इज द थर्ड रियलाइजेशन दैट आई हैव गाइज? थर्ड रियलाइजेशन आ रहा है 10,000 का। 10,000 में से पहले क्या निकालोगे गाइस? यू टेल मी, 10,000 से पहले क्या निकालोगे? 1%। पहले 1% निकालोगे, सो 10,000 में से 1% निकाल दिया तो 100 निकल गया, 9,900 बचेगा। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, फिर से कॉलम्स बनाऊंगा, और जैसे कॉलम्स कम होते जाते हैं वैसे वही कॉलम्स बनाना, सारे कॉलम्स नहीं बनाते रहना वरना पागल हो जाओगे तुम लोग। सो ए, बी, सी, टोटल लायबिलिटी और कैश, अब यही बचा है अपने पास। सो गाइज दिस इज 9,900। अब 9,900 से क्या निकालूंगा पहले गाइज? कैन आई से वो 10% सी का रेम्यूनरेशन। अब वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, 9,900 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। इज इट गोइंग टू बी 900? Is it going to be 9,000? Do you agree with this guys? Yes, too good guys। इसके बाद अभी गाइस याद रखना कि सेकंड पे 8750 का था, बट 8750 में से आपने सिर्फ 7,600 पे किया था। सो 8750 माइनस 7,600 गाइस, आपको 1150 अभी भी पे करना है। डू यू अग्री विद दैट वन? और 1150 कौन से रेशियो में पे करना है? इन विच रेशियो यू हैव टू पे this 1150 guys? In 4:3. So I'm still left with the second pay. So second pay to A and C in 4:3 guys, 1150 total liability 1150 divided by 7 into 4 guys, I'm getting 657 out, and 3 I'm getting 493. Am I getting this right answers guys? Okay. So guys, out of 9,000, I'm done with 1150. So I'm getting 7,850. Guys, my total liability was 26,150. So 26,150 minus 1150, I'm getting 25,000. Guys, A's balance is 10,000. Do you agree with that? Guys, B's balance is 7,500. B's balance is 7,500. And guys, C's balance comes to 7,993. 7,993 minus 493. I'm getting 7,500. Too good. And guys, point to remember. What is a very important point to remember? That after this, guys, after this, after second pay, every capital should be in PSR. That is 4:3:3। आप एक बार चेक कर लो कि ये सारे कैपिटल PSR में है कि नहीं। 10,000, 7,500, 7,500 are they in the ratio 4:3:3? That's a checkpoint. Tell me, Jackass guys, tell me, do you understand this well? Classic. Chalo guys, continue. This is the second pay done. What's the third pay now? Realize